What is Wildlife Protection Act? Yes. Protection of species, flora and flora. बहुत कुछ बताया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, ऐसे मत करो. हाँ, what we have done in Wildlife Protection Act? What is this? 1972 में आया था, पर क्या क्या for what purpose? वो तो उसका इफेक्ट था, वो मेन पर्पस नहीं है वाइल्ड लाइफ का. हाँ, और एक काम करिए, what I have the definition which I have given to you, just read that out, then you will understand. पढ़िए इसको एक बार. What you can get from here? Also repeat it for me. पढ़िए. Wildlife Protection Act. हाँ, स्टार्टिंग से पढ़िए. For first line, wait, first line क्या है? Protection of इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरियाज को कंजर्व कर, बिकॉज वाइल्ड लाइफ को हमें, वाइल्ड स्पीशीज को हमें कंजर्व करना है, ठीक है. एंड फॉर दैट कंजर्वेशन दिस एक्ट वाज मेड, राइट. इट गॉट व्हाट लीगल बैकिंग कि अगर एनीबॉडी वुड ट्राई टू वॉलिएट एनी काइंड ऑफ एरिया, देन दे हैव टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है. और बताइए, व्हाट एल्स? कैन यू जस्ट टेल मी फॉरेस्ट एक्ट 1980 नाउ, बताइए. फॉरेस्ट एक्ट 1980 बताइए. Correct, right. So Forest Act 1980, the purpose was to not allow people to do the activity for the non-forest purposes, ठीक है. अब इसी को ध्यान में रखते हुए, because we wanted to protect the areas, we had a different what strategy now. We wanted to protect the area, so we have to do something. What we will do? We will make national parks and wildlife sanctuary, right? National parks के बारे में पढ़िए. Can you just give me some of the differences which I highlighted yesterday for the national parks and wildlife sanctuary? What are they? Wildlife sanctuaries are pure restriction. Few, yes, that's right. They have less restriction. That is absolutely correct. Then what else? Very good. Official permission is not that much required for the, because for what? That is also important. Official purpose for what? No. For? और चेक करो क्या लिखा है. For visit. ऐसे randomly नहीं बोलना है. There is no text without context. अगर आपने बोल दिया नो ऑफिशियल पर्पस, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कोई भी जा सकता है, ऑफिशियल पर्पस रिक्वायर्ड ही नहीं है तो, ठीक है. सो यू हैव टू टेल किस पर्पस की बात हो रही है. द पर्पस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज ऑफिशियल विजिट. जैसे आपको विजिट करना है, टूरिस्ट को विजिट करना है, उसके लिए यू डोंट रिक्वायर. आगे बढ़िए.
और क्या डिफरेंसेस लिखवाए हैं? Are not fixed. Very good. Delineated. That is the word that we used. उसके लिए क्या यूज करा था? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी sacrosanct. क्या मतलब है? That we can, the boundaries are not fixed as national park. If I have to change the boundaries of the national park, then what I have to do? I have to take the permission from whom? Approval of NBWL, right? National Board for Wildlife. And along with that, resolution will be passed by state governments. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? इसमें कोई और अंडरस्टैंडिंग की जरूरत? आप खुद से करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, राइट? बहुत जगह काफी काफी चीजें दी हुई हैं, so I'm just concising everything for you so that you don't have to go haywire. बुक्स में देखेंगे, शंकर आईएएस में देखेंगे, कोई और बुक में देखेंगे, then what will happen? You will get confused, क्योंकि वहां पे भी चीजें ऐसे स्कैटर्ड वे में दे रखी हैं, not at one place. So I am reducing your work. ठीक है? Who all wants to write tabular format में differences for the prelims? Do you want to write tabular format में? चाहते हो या फिर enough है? चाहते हो tabular form में? बता दूं एक बार. ठीक है, लिखिए. टेबल बनाइए. इधर लिखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इधर लिखिए नेशनल पार्क्स. ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क्स. राइट डाउन. लेफ्ट में लिखेंगे ह्यूमन एक्टिविटीज आर अलाउड. यहाँ लिखेंगे ह्यूमन एक्टिविटीज आर अलाउड. यहाँ पे नो ह्यूमन एक्टिविटीज. Next, the main aim is to protect particular flora and fauna. यहाँ पे the main aim is और भी पर्पस हो सकते हैं इसके. क्या कल मैं आपको लिखवाया था? ज्योग्राफिकल पर्पस, हिस्टोरिकल पर्पस, वो भी ऐड कर लीजिए. हिस्टोरिकल पर्पस. कैन यू टेल मी सम ऑफ द प्लेसेस फॉर हिस्टोरिकल पर्पस? ज्योग्राफिकल पर्पस. ठीक है, नेक्स्ट लिखिए. ये आपको पता ही ऑलरेडी. नो फिक्स्ड बाउंड्री हियर. नो फिक्स्ड बाउंड्री वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लिखेंगे, और नेशनल पार्क्स में लिखेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर डिफाइंड. फिक्स्ड एंड डिफाइंड. मैम क्या लिखना है वाला पॉइंट?
हाँ, और मुझे किसी पता चली क्योंकि मुझे लिखा नहीं ना मैंने, इसलिए आई नो लॉट ऑफ पीपल विल हैव कंफ्यूजन। ऊपर वाले पॉइंट में मैं लिख रही हूँ नो फिक्स बाउंड्री, boundaries are fixed and defined। ठीक है, फिक्स्ड एंड डिफाइंड। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इट इज ओपन फॉर जनरल पब्लिक। इसमें इट इज ओपन फॉर जनरल पब्लिक, इट इज ओपन फॉर जनरल पब्लिक। उसमें लिखेंगे नॉट यूजुअली ओपन फॉर पब्लिक। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट which I have discussed with you yesterday. What is that? Wildlife sanctuary can be upgraded to national parks. The national parks, once you have uh, notified that this is a national park, you cannot degrade them. ठीक है, अभी लिखते हैं, पहले everybody should write all these points. मैं लास्ट वाला पॉइंट में हटा दूं क्या? ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जब आपको प्रीलिम्स से रिवाइज करना है, ये वाला चार्ट देखेंगे आप, ठीक है, डायरेक्टली। उसमें आप इतने बड़े नोट्स नहीं पढ़ेंगे क्योंकि रिवीजन चाहिए, तो टेबल्स आप रेफर करेंगे क्विकली, ठीक है। Sanctuary can be upgraded to national parks। में लिखेंगे cannot be downgraded to wildlife। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट यहाँ तक? हाँ जी, यस। आई थिंक नेशनल पार्क्स में नहीं होती है, पर अगर करना चाहे कोई तो मे बी परमिशन, लेकिन नहीं होती है। नॉट, नो, दे आर नॉट अलाउड। नो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज मोस्टली, most of the time। Otherwise, I'll get back to you because I have done this thing activity, but I don't remember it was wildlife sanctuary or national park. You know, done everyone? ठीक है, कोई और डाउट इसके अंदर कुछ भी तरह का तो प्लीज अभी पूछ लीजिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं अपना, विच इज योर। हाँ, एक चीज आपको मुझे ऐड करवानी है। हाँ,
हाँ, एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है वाइल्ड लाइफ में। स्टेट गवर्नमेंट्स क्रिएट्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, state governments create wildlife sanctuary by issuing a notification. State government creates a wildlife sanctuary by issuing a notification. ठीक है, अब नेशनल पार्क्स में लिखेंगे स्टेट गवर्नमेंट क्रिएट्स national park by issuing a notification. By issuing a notification. हाँ, अब एक लिखिए आप कम्युनिटी रिजर्व। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन हमारा क्या है? कम्युनिटी रिजर्व। राइट डाउन। कम्युनिटी रिजर्व is a type of protected area. Community reserve is a type of protected area in India, comma, introduced in the Wildlife Protection Act 2002. Introduced in Wildlife Protection Act, कुछ मिस कर दिया, 2002, comma, where community, please underline the word community, where community or individual voluntarily, where community or individual voluntarily, ठीक है, या तो कम्युनिटी साथ में मिलके या फिर कोई इंडिविजुअल इनिशिएट करना चाहता है तो इंडिविजुअल commits to conserve wildlife and its habitat on their private on their private or community owned land or community owned land. ठीक है, so you know what is community reserve? If somebody wants पूरा area, for example some park and there are some species which are living here, right, and they are owning, सबसे ज्यादा कहाँ होगा ये? जहाँ पे agriculturally rich area है, not in Delhi कि आप छोटे छोटे पार्क्स को कम्युनिटी रिजर्व बोलने लगे. This is done mostly in the areas where you have big acres of land and you know that there are some species which are dependent. Now you will voluntarily do that or a community will come and they will say we will protect this area. ठीक है, no one is allowed. आपका एक नोटिफिकेशन लेके गवर्नमेंट से they will put some kind of restricted banners के यहाँ पे ये चीज अलाउड नहीं है या फ्री फ्लो ऑफ द, हाँ फ्री, हाँ ट्रेस पासिंग नॉट अलाउड, ये सारा चीजें आपका इसके अंदर इन्वॉल्व होता है. ठीक है, या वॉलंटियर करते हैं. ठीक है, सो नेक्स्ट इज, हाँ बिल्कुल है, व्हाई नॉट. ठीक है, प्रोटेक्टेड एरियाज लिखिए. Protected areas are geographically defined. Protected areas are geographically defined spaces. Protected areas are geographically defined spaces managed by legal or
other effective means managed by legal or other effective means. Effective means to ensure long-term conservation. To ensure long-term conservation of nature, including its ecosystem, comma, cultural values, and associated services. And associated services. ठीक है, जैसे आप लिखेंगे मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज, मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज. देखिए कभी आपके पास ये आ गया टेल द प्रोटेक्टेड ऑल प्रोटेक्टेड एरियाज, तो नेशनल पार्क भी प्रोटेक्टेड एरिया है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी प्रोटेक्टेड एरिया है, बट उससे कंफ्यूज मत होना, ठीक है, क्योंकि सारे ही प्रोटेक्टेड एरियाज हैं. लेकिन अगर लोएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन आप दे रहे हो किसी भी चीज को, तो आप उसके आगे नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नहीं लगाएंगे, आप सिंपली लगाएंगे प्रोटेक्टेड एरियाज. जैसे मैंने यहाँ पे लगाया मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज, ठीक है, उस तरह से प्लेस का नाम एंड प्रोटेक्टेड एरिया, अब उसे प्रोटेक्ट किया है लेकिन उस लेवल का आपने उसको रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क्स में लगता है, बिकॉज यू डोंट फील द नीड एज ऑफ नाउ. सो आप उसके आगे प्रोटेक्टेड एरियाज लगाएंगे. तो कंफ्यूज मत होना. somebody someday the main question is asking tell all forms of protected area. So national park, wildlife sanctuary, protected areas, community reserves, everything, sector groups, they come under protected areas only. ठीक है. Now we will do biosphere reserve. Write down. हमने बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के सारे पॉइंट्स लिख लिए. जस्ट चेक वंस. एस्थेटिकल वैल्यूज, प्रोडक्टिव, जो भी उनका एक यूज है, आई थिंक वी हैव रिटन ऑल दैट. आई एम जस्ट वाचिंग दैट एवरीथिंग शुड बी कवर्ड. आई एम जस्ट मेकिंग श्योर. जस्ट चेक वंस. Difference we have done. I think have we done the in situ ex situ? Yes, we have done that too. What else is left? Okay, I guess one thing which is left is hotspots. Yes, उसके बाद हम बायोस्फीयर रिजर्व्स करेंगे. राइट डाउन. हैव यू डन हॉटस्पॉट्स? चेक करिए. बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स नहीं किया ना? ठीक है. राइट डाउन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स. हाँ हाँ, एग्जाम्पल. नो, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इज अ डिफरेंट टॉपिक. इस अलग से हो गया. हाँ, हेडिंग ही तो बोल रही. नहीं नहीं, एग्जाम्पल है. देन शी इज राइटिंग एग्जाम्पल. आप लोगों को हेडिंग क्यों लग रहा है? एक्सप्लेन भी करा है उसके बाद. राइट डाउन hotspots of
biodiversity. Hotspots of biodiversity. What do you mean by hotspots? The area which are important, highlighting something, right? Why the this activity of hotspot has come? वर्ल्ड में बहुत सारे हॉटस्पॉट्स हैं इंक्लूडिंग इंडिया के अंदर, ठीक है. So we have identified some of the areas which are culturally, ecologically, and they have many species present in that particular area. And then they're so species rich, then we have to identify them as biodiversity hotspot. उसका एक criteria होता है. कोई भी if people want to declare their area or their big area as the biodiversity hotspot, that cannot happen because we have to follow some of the criteria for that, right? You don't have to come for the criteria right now. Just first understand what is biodiversity hotspot. Okay, write down areas which exhibit 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 means shows or reflects. Areas which exhibit high species richness. Underline the word high species richness. ये जो मैं words underline करा रही हूँ, this is important for your prelims. High species richness as well as high species endemism. High species endemism. Underline this also. High species endemism are termed as hotspots of biodiversity. Biodiversity. Now write down species which are restricted only to particular areas. Species which are restricted to only to particular areas are known as endemic. This is the meaning of endemism. Endemic का मतलब क्या है? ये वर्ड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में यूज होगा. एंडेमिक मीन्स यही से बिलोंग करती हैं वो स्पीशीज. एनी स्पीशीज विच बिलोंग टू दैट एरिया ओनली, वहीं पर ही ओरिजिनेट करती हैं, वहां पे इट बिलोंग्स टू दैट एरिया, वी कॉल दैट स्पीशीज एज एंडेमिक. इफ वी आर ब्रिंगिंग सम स्पीशीज फ्रॉम आउटसाइड, दैट इज नोन एज इन्वेजिव. एंड जरूरी है जिस भी स्पीशीज को ला रहे हैं वो इन्वेजिव होगी, दैट इज वेयर यू आर गेटिंग रॉन्ग. Invasive species means what? हाँ, they are also ruining the area. Invasive का main purpose क्या है? They do not let the other species to thrive. खुद thrive करने लग जाते हैं. So that's why इनका word है invasive. Invade करना. Invasive is coming from the word invade. Invade means attack. ठीक है? तो इन्वेजिव का पर्पस ये वो नहीं है. एंडेमिक का ऑपोजिट कुछ और है. दो कभी कभी यूज कर लेते हैं लोग इन्वेजिव का मतलब ये, बट एंडेमिक मीन्स समथिंग विच इज बिलोंगिंग टू दैट प्लेस ओनली. ठीक है, आप इसको नेटिव भी लिख सकते हैं या फिर बोलेंगे नॉन नेटिव स्पीशीज. इन्वेजिव नहीं बोलेंगे उसको, नॉन नेटिव स्पीशीज बोलेंगे. ठीक है, अब लिखिए, राइट डाउन. India shows a good number of endemic species. India shows a good number of endemic species. Full stop. About 62% of amphibians. About 62% of amphibians and 50% of lizards are endemic to India.
They are 62% of amphibians and 50% of lizards are endemic to India. Full stop. Western Ghats are the sites of maximum endemism. Western Ghats are the sites of maximum endemism. The term hotspots was introduced by I'm writing on the board, mayors. ब्रैकेट में लिखेंगे 1988. Mayors ब्रैकेट में लिखेंगे 1988. Full stop. There are 25 such hotspots of biodiversity on global level. 25 such hotspots of biodiversity on global level, out of which 2 are present in India, namely Eastern Himalayas and Western Ghats. Eastern Himalayas को अंडरलाइन करेंगे और Western Ghats को अंडरलाइन करेंगे. ठीक है. These hotspots covering less than 2% of the world lands, 2% of the world lands are found to have about 50% of terrestrial biodiversity. मतलब 2% ही एरिया में, इतने से 2% जो हम कवर कर रहे हैं area wise, which is 2% only as compared to the world, right? World land area. But the kind of diversity that we are protecting, it is 50% richness है यहाँ पे. आप सोच रहे हो कितना rich है species wise. ठीक है, क्या मिस किया? ठीक है. Full stop. According to mayors, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, प्लीज अंडरलाइन दिस. अकॉर्डिंग टू mayors, कर दीजिए 2% ऑफ वर्ल्ड लैंड के बाद क्या बोला? बहुत जल्दी बोल रहे हो आप. अच्छा, किसकी बात? 2% ऑफ वर्ल्ड लैंड के बाद. अच्छा, 2% of world's land are found to have 50% of terrestrial biodiversity. Full stop. Next लिखेंगे, according to mayors, MYERs, according to mayors, an area is designated as hotspot when it contains at least कम से कम at least 0.5% of species. 0.5 का क्या मतलब है? People. कौन सी स्पीशीज? अभी भी मैंने गलत लिखा. अभी ये जो इंफॉर्मेशन है ये इनकम्प्लीट है फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू. कौन सी स्पीशीज? बोथ या ओनली प्लांट्स या ओनली एनिमल? 0.5% of plant species. ठीक है.
प्लांट स्पीशीज, ब्रैकेट में लिख लीजिए प्लांट, ठीक है। प्लांट स्पीशीज एज एंडेमिक्स। कहीं कहीं आपको 0.5% मिलेगा, और जब आप एक्चुअली देखेंगे इसको, यू विल फाइंड दैट इट इज 0.5 का मतलब है एटलीस्ट दे शुड हैव 1500 स्पीशीज, 1500 प्लांट स्पीशीज प्रेजेंट, कम से कम इतनी तो होनी ही चाहिए। क्या? एंडेमिक। एंडेमिक और करके लिख लीजिए ऊपर वाला पॉइंट। यहाँ तक किसी को डाउट? राइट डाउन। बायोडाइवर्सिटी, biodiversity hotspots are declared by conservation, are declared by conservation international. They are declared by conservation international. अब आप पूछेंगे what is this conservation international? It's an independent international institution, right, which declares biodiversity hotspots. ठीक है, इसको अभी यही क्लोज कर दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए। डायरेक्टली सिर्फ इतना ही आएगा आपसे, इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे इसमें। कौन डिक्लेयर करता है, ज्यादा से ज्यादा ये आ सकता है, राइट। इसके इंटर कन्वेंशन इंटरनेशनल के बारे में नहीं पूछेंगे, ठीक है। आर यू गेटिंग मी? ओके, राइट डाउन criteria to declare, criteria to declare biodiversity, criteria to declare biodiversity hotspots, criteria to declare biodiversity hotspot। सिर्फ दो क्राइटेरिया, एक तो मैंने बता दिया है, पर स्टिल आई मेक यू राइट, एक ही साथ बॉक्स में बना के लिखेंगे, बिकॉज ये पॉइंट आपके प्रीलिम्स की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। बॉक्स में बना के लिखेंगे, अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट must meet two criterias. A biodiversity hotspot must meet two criterias. The first one is it must contain at least 1500, it must contain at least 1500 endemic, it must contain at least 1500 endemic vascular plant species. I'm using the word vascular, vascular plant species, ठीक है, vascular plant species। सेकेंड लिखेंगे, it must have lost 70%, it must have lost 70% of its natural habitat, ठीक है। First point, these regions are vital for global biodiversity. These regions are vital for global biodiversity, but they are also under significant threat, ठीक है।
Okay, I'll explain you this point. Okay, so वेस्कुलर प्लांट स्पीशीज कितना होना चाहिए 1500 एटलीस्ट, ठीक है। दूसरी चीज 70%, जो 70% है इसका हैबिटेट वो क्या होना चाहिए, डिग्रेड हो चुका होगा, तभी तो इसको हम कंजर्व कर रहे हैं, तभी तो हॉटस्पॉट्स बन गए, ठीक है। तो इट शुड बी प्रोटेक्टेड। इंडिया के अंदर जो टू हमने डिस्कस करने हैं अभी hotspots, the first one is, which is very important, is Western Ghats. Western Ghats, right? Where the Western Ghats are lying? On the, can you tell me which all states the Western Ghats covers? Maharashtra, Karnataka, Goa, Kerala, Tamil Nadu, yes. आंध्र प्रदेश नहीं, गुजरात। 6 हैं, ठीक है। प्रीलिम्स में भी आया है किसके, नॉट आई थिंक यूपीपीसीएस के नहीं, यूपीएससी के, ठीक है। 6 स्टेट्स हैं, गुजरात, योर महाराष्ट्र, योर गोवा, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, ठीक है। ऑल दीज आर कवर्ड। कैसे कवर्ड है, तमिलनाडु में कैसे जा रहा है, लाइक दिस, इस तरह से कवर्ड, like this. That's why Tamil Nadu is also involved. Okay, so these are very, very important. What? Biodiversity hotspot. They are very, very rich. क्यों rich है यहाँ पे, क्यों है individual? Why the species wise they are very rich? The first thing is monsoon, right? The monsoon is very, very in high, intense in these areas, right? Apart from that, they have a good agriculture, fertile land here, right? Therefore, what happens? The cultivation of rice, the cultivation of coffee, tea, etc., which happens here. Cotton also in Maharashtra and in Gujarat as well, right? And then what happens here? There are some mountains, right? Do you know about Nanaimudi, Cardamom Hills, and Baba Bhutan? There are many ghats also, right? Small ghats present here, like Pala Ghat, Thala Ghat. They are present here only, right? Western Ghats is culture, it's species wise, it's very, 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 very rich, extremely rich. That's why we have to conserve. Recently, Karnataka government has said, this is a current affair report, Karnataka government has said that we are not going to abide by Kasturi Rangan committee. What is this Kasturi Rangan committee? Kasturi Rangan committee has given its report on the Western Ghats. क्या बोला था उन्होंने? उन्होंने बोला था कि 37% of this area should be protected. 37% should be protected, and if it's not be protected, then क्या होगा यहाँ पे? Detroit होगा area, ठीक है। अब what Karnataka government is saying that, see, because we want that there should be what, proliferation of the development, your industrial development, your different activities should take place. What is a committee, by the way? Do you know what is committees? There are some bench of pool of people which have been selected, which do what? Which do the analysis on certain thing. वो पूरा देखते हैं, ठीक है, and then they bring out the report. So the governments were mandated. This was a mandate for them to maintain what, to abide by the Kasturi Rangan committee. अब पढ़िएगा एक बार जाके कस्तूरी रंगन कमेटी के बारे में, you will get the idea, right? Recently, what they have said, there is a conflict between government that we are not going to abide by this because we have to do what? Industrially, we have to proliferate. We have to also develop. We have plans in our mind. So for that, आपको Western Ghats को क्या करना पड़ेगा? Touch तो करना ही पड़ेगा, right? In that case, so they are not abiding by that. ठीक है? अच्छा. उसके अलावा what government is saying, Karnataka government is saying, the picture is very different from what the satellite images are showing. So Kasturi Rangan has made a report on the basis of satellite images, but how the picture was before and how it is now. For example, I am giving a report, then I need evidences also, right? So I will see the picture of 20 years back, how was it, and now I'll see now. Okay, so I'll do the analysis. So by looking at those satellite images, Kasturi Rangan committee has said the area has degraded to much extent. Now there is a high level of protection required, and even if you want to do some kind of, even government wants to give the permit
because they have to take the permit. कोई भी इंडस्ट्रियल आप कुछ भी काम करेंगे, you have to take the permit first. तो आपको उसके consequences देखकर permit देना चाहिए. If I am in the government, I have to see the consequences first, what could be the repercussion, and then I will give the verdict. उससे पहले नहीं, ठीक है. Now Karnataka government is saying what they have done is by watching it through the satellite images, but जो scenario है actual में reality में वो बहुत different है, इतना खराब नहीं है, right? That is what they are claiming. So there is a conflict now, and this example is perfect for this particular area because we are talking about Western Ghats, we are talking about its preservation, and now the Kasturi Rangan committee exactly fits into this. ये current affair आप कहाँ use करेंगे? अपनी mains answer writing, ठीक है? Now getting how you have to link the mains and the currents, right? इस तरह से relevance you have to create. Now write down about Western Ghats. Western Ghats. Western Ghats. Write down. It extends along 1700 square kilometer. 17,000 kilometers square strip of forest in Maharashtra. मैम ये वाला बोलिए 17,000 स्क्वायर किलोमीटर के बाद वाला वर्ड बताओ. It extends along 17,000 kilometers square strip of TRIP मैम वर्ड पूछ रही हूँ मैं. yes, strip of forest in Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu and Kerala. And has 40% of the total endemic plant species. Full stop. The major centers of diversity. मैम थोड़ा धीरे धीरे बोलिए, आप बहुत जल्दी जा रहे हो. Okay. There are major centers for diversity. Which are Agastyamalai. Write down. AGASTYAMALAI. Agastyamalai Hills. What happened? Have you missed something? बताइए. You would have asked me. क्या मिस किया? बताओ, शुरू से रिपीट कर देती हूँ. बताइए. चलिए ठीक है. आई एम रिपीटिंग अगेन. राइट डाउन वेस्टर्न घाट्स का डेफिनेशन. राइट डाउन डेफिनेशन नहीं मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स. इट एक्सटेंड्स अलोंग, देखिए, इट एक्सटेंड्स अलोंग a 17,000 किलोमीटर, ऐसे लिखेंगे. 17,000 किलोमीटर स्क्वायर strip of forest in Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu and Kerala, and has 40% of total endemic plant species. ठीक है. First stop, the major threats of diversity. The major threats of diversity. H नहीं है, बस क्या है? नहीं, H होता है वैसे.
I'll check the spelling again. I think it is there. It is there. I don't know मैम why. ऊपर जो स्टेट्स लिखवाए हैं आपने उसमें गुजरात नहीं आएगा? नहीं आएगा, गोवा भी नहीं है उसके अंदर. हाँ, और सेकंड वाला पॉइंट बता देंगे, देयर आर मेजर. एक सेकेंड. This is the spelling, not this one. I was doubting मैंने वहां पे गलत लिखा है. This is the spelling. अगस्त्य मलाई. ठीक है, ठीक है. The major center of diversity are Agastya Malai Hills and Silent Valley. And Silent. ये है Agastya Malai and Silent Valley. ठीक है. अब ईस्टर्न घाट्स लिखेंगे, ईस्टर्न हिमालय, सॉरी आई रेड ईस्टर्न हिमालयस. ईस्टर्न हिमालयस कहाँ पे होंगी? अरुणाचल प्रदेश, असम एक्सेट्रा. ठीक है, राइट डाउन. They display an ultra varies. They display ultra varies. They display ultra varies topography, topography, ultra varies topography that fosters species diversity, that fosters species diversity and endemism and endemism. Full stop. Recent studies have shown that Northeast India, along with its regions of Burma and Chinese provinces, regions of Burma and Chinese provinces is an active center of is an active center of organic revolution of organic revolution and is considered to be the cradle of CRADLE. They are considered to be the cradle of CRADLE, cradle of flowering plants. Flowering plants. Full stop. Out of world's recorded flora, out of the world's recorded flora, out of the world's recorded flora, 30% are endemic to India, of which 35,000 are in Himalayas. 35,000 are in Himalayas. ठीक है. Now we will write down threats to
एक बार ये देख लीजिए, उसके बाद we will move. First see if we have any doubt, then we'll move to another topic. Just see. एक्चुअली टॉपिक हमें पहले करना चाहिए था, थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी. हैव यू डन दैट? पहले नहीं किया ना, कॉजेस लिखे थे, थ्रेट्स नहीं करा था. ये आ जाता है मीन्स में कभी कभी. फर्स्ट यू हैव अ लुक, टेक योर टाइम, टेक 2 minutes. जितना भी किया है प्लीज रिवाइज एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट. ऑनलाइन स्टूडेंट, आई एम ऑल्सो गिविंग यू टाइम टू आस्क मी एनी क्वेश्चन 2 minutes के अंदर. ठीक है? डाउट, कोई कॉन्सेप्चुअल डाउट है तो आप पूछिए. Any doubts? Okay, so people who are watching online also, like on YouTube, they can also ask me any questions. Okay, feel free to ask questions because I have opened the portal, and you can also connect with me via comment section. Okay, write down threats to biodiversity. Threats to biodiversity.
मैम आप Threat- प्लीज जल्दी जल्दी मत बोलिएगा, हम बच्चों का छूट जा रहा है। अच्छा ओके, और तेज जा रहा है क्या? हाँ सही चल, चलो ठीक है ओके। थ्रेट्स टू बायो, हु हैज सेड दिस, कौन है? ओके मैम राइट मैं डाउन। अच्छा अच्छा मैंने okay. बोला। अच्छा, थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी, ओके राइट डाउन। Extinction or elimination of species is a natural process of evolution. Following are the major causes. Following are the major causes for the threat to biodiversity. Biodiversity. First is habitat destruction. First is habitat destruction. The first point is habitat destruction. Write down under it. Habitat destruction has played a key role in extinction. Has played a key role in extinction, comma, especially related to tropical forest destruction. Tropical forest destruction. Factors contributing to habitat loss are overpopulation, comma, deforestation, comma, pollution, and global warming. Global warming. Second is poaching. Next is poaching. लिखेंगे इसके आगे illegal trade of wildlife species. Illegal trade of wildlife species by killing prohibited endangered animal, that is poaching, is another threat. Poaching is another threat to wildlife items, wildlife, full stop. Despite international ban, despite Ma'am, what is international, after danger animals? that is poaching is another threat. What happened, guys, online students? Any confusion? I can see the messages right here. Akriti, any doubt?
मैम पोचिंग में इलीगल ट्रेड ऑफ वाइल्ड लाइफ स्पीसीज बाय किलिंग प्रोहिबिटेड के बाद बता दीजिए। अब तो स्पीड बहुत स्लो है। मैं काम करूँ, आपको प्रिंटेड नोट्स ही दे दूँ? नहीं मैम, आप बस किलिंग प्रोहिबिटेड के बाद बता दीजिए, हम लोग लिख लेंगे फटाफट। बस एक कि बार बहुत धीरे बोल रही हूँ मैं, काफी धीरे। अब ठीक है, I'll switch to another method अगर कोई डाउट है। Write down. Prohibited endangered species, that is, poaching is another threat to wildlife. Full stop. Despite international ban, despite international ban on trade in products from endangered species, comma, smuggling of wildlife items like furs, comma, hides, HIDES, comma, hides, comma, horns, comma, tusks, and herbal products worth million of millions of dollars millions of dollars per year continues ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, थर्ड पॉइंट, मैन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। मैन वाइल्ड लाइफ conflict is important. Man wildlife conflict. Write down. We have discussed about the need to preserve. We have discussed about the need to preserve and protect wildlife. Full stop. However, sometimes we come across conflicting situations when wildlife starts causing immense damage and danger to men. And under such conditions, it becomes very difficult for the forest department to pacify pacify the affected villages and gain local support for
wildlife conservation. अब आप लिखेंगे causes of men effect. इसमें ज्यादा नहीं लिखना, सिर्फ पॉइंट्स लिखने हैं. causes क्या है इसके अंदर ही लिखना है, थर्ड पॉइंट के अंदर. पोल्यूशन, causes of men एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के रीजंस लिखिए. इसी के अंदर invasive non-native species. invasive non-native species. Second, pollution. Second point, pollution. Third point, land use change. Third point, land use change. Next point, increased infrastructure. Increased infrastructure development. Next, intensive farming practices. And last, climate change. Okay, so we have completed everything with respect to this. Okay, about what? Biodiversity. Tomorrow we'll start a new topic, right? Any doubt, please ask me. You have 1 minute. Rashi, I am already speaking at a very slow rate. बहुत नहीं मैम, आप मीडियम पेस पे भी चलो. बात ये हो रखी कि आप जब एक लाइन रिपीट करते हो ना, तो वो लाइन जैसे आप मीडियम पेस पे भी चलो, चलेगा मैम आपका मीडियम पेस. बस उस लाइन को एक बार रिपीट, जैसे पहली बार बोला उसको दूसरी बार रिपीट कर दो. आप जब एक बार लाइन बोलते हो उसको रिपीट नहीं करते हो ना, तो आधे बच्चों का छूट गया है आज का. थोड़ा थोड़ा वर्ड्स या लाइन छूट जा रही है. ये रिक्वेस्ट है आपसे. ठीक है, वी विल डू दिस. ठीक है, नो प्रॉब्लम. ठीक है. हाँ, किसको? कोकेन स्कैनर? कौन सी बुक में लिखे हैं आपने? एक सेकंड, जस्ट होल्ड ऑन. कोपनहैगन. Copenhagen. Tell me the spelling. Acha, Kopen's classification you're talking about. This Kopen's. This. Then. Thank you so much, class. Thank you.